We are at the Naseem Iqtidar Ali Literary Guftagu at the 15th Mahindra Sanatkada Lucknow Festival. We are very grateful to Syed Rushdi Hassan and Syed Farhan Hassan and their family for opening up their home so graciously to us. Salimpur House is part of the larger Kesarbagh Palace complex built by the last Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah. This year, we dedicate our literary sessions to the memory of late Dr. Naseem Iqtidar Ali, who left us a few years ago. She mentored this festival from its very inception and always pushed us to excel. We have with us today Soumyadeep Roy and Dr. Roshan Taqui. Soumyadeep is a visual artist whose work has been exhibited in art programs, exhibitions, and residencies, both nationally as well as internationally, in Mumbai, the UK, New York, South Korea, and Bangladesh. Roshan Taqui is an Indian historian specializing on Lucknow and its culture. He is an alumnus of Aligarh Muslim University and currently a faculty member at Lucknow University. He regularly writes a column for the newspaper Awadh Nama and has authored books including Lucknow 1857, Lucknow Monuments, Conservation Methodology Problems and Solutions, and Images of the Lucknow. We can start the discussion with Dr. Taqui and Soumyadeep. Thank you. Thank you so much for the beautiful introduction, Mobuni. And it's such an honor, to share the stage with you. So I'm a visual artist from Kolkata, and my journey and my association starts in 2017, where I was trying to examine the people who migrated with Wajid Ali Shah to my city, in the city of Kolkata, in Metia Buruj. And then through a series of events, of course, my work started looking into the figure of Wajid Ali Shah, and that search is still on. Thank you. And thanks to Madhvi and the wonderful people of Sanatkada, that I feel honored to be here in the Kesarbagh complex at the Salimpur House and to be sharing the stage with you, sir. And so, without further delay, just a brief introduction about the figure of the romantic and the ashik and the context in which Wajid Ali Shah essentially emerges. So for that, we'd go back about 300 years ago to a different land in Persia. So this particular painting, these two paintings that we see here, are paintings from the time of Shah Tahmasp, who's ruling in Persia. And these paintings are by really iconic painters, like this first particular painting is around the 1500s, around the mid-1500s, painted by this person called Muzaffar Ali, who is related to the illustrious and the great Behzad, who around this time when the Shahnama text in Persia is in vogue. And this figure of the prince, who is both sensitive as well as very well read, is emerging not just in visual arts, but as the figure itself. Aga Mirek, again, is contemporary to Shah Tahmasp, who also illustrates one of the Shahnamas in this period, in the mid-1500s. And these painters, now Abdul Samad and Mir Sayyid Ali, these artists from Persian high culture, they end up coming to the land of India. And of course, then that merges through the Mughal court and the different miniatures. But this figure continues. This figure continues to the different royal figures in the Mughal court and the Mughal times. And this figure of the ashik and the romantic, who is not just a lover of, say, people, but of the entire realm, because they are also the overlords of the entire realm. So this love would extend not just to people, but to animals and to birds. And you have then the grandson of Humayun, Jahangir, with a falcon. And the forms also, of course, change over the course of these few decades. And this itself finds its language in India. And here again, the three Mughal emperors, Akbar, Jahangir, and Shah Jahan together, with an antelope and animals. So while this figure is contextually developing, it sort of reaches a peak around the time of Shah Jahan. And again, over the course of the next few years, the political context in Delhi changes. And then, to give you a brief overview, this painter called Chitterman,
who runs again a workshop in Muhammad Shah Rangile's time in the 1700s. So now we are again 200 years down, and exactly 100 years before Wajid Ali Shah, we come to the court of Kishangarh, where a student of Chitterman from the Mughal court, Bhavani Das, like a contemporary rather of Chitterman, goes to the court of Kishangarh and teaches this person called Nihal Chand, who paints this image. And again, you have the example of this figure of a royal and a poet who's both traversing this idea of being a prince as well as an artist. So this is Sawan Singh, who, again, similar to Wajid Ali Shah, is dressed as Krishna, and he would imagine himself, and again, like Wajid Ali Shah, would blur the lines between fact and fiction. So this painter, Nihal Chand, then imagines him as Krishna, and with his consort, Radha, who is again in real life this person called Bunny Thani, which is again the portrait you would see in Vogue. So this is also, by the way, parallel to the painters of Chitterman's period who are also migrating to the different provinces as the Mughal center in Delhi sort of disperses. So while Bhavani Das is going to Kishangarh, you also have Mihir Chand and Nidhamal, who come to this land itself in Awadh. And along with it also comes the different miniature folios and the different albums from the Mughal times, which of course then informs these different painting traditions that develop both in Kishangarh and in Awadh and the other different provinces. So, 100 years before Wajid Ali Shah comes, you already have another king who is also imagining himself in the garb of Krishna, and again the figure of the romantic that you saw in terms of the Persian paintings initially, how that goes through a certain change and how that then also gets informed with. So this painting is at the National Museum, and if you look in closer, there are paintings within the painting. So you have further play going on, and something that is also being done similarly by the painters in Awadh at this point in the 1700s. And again, because Lucknow is such a cosmopolitan city, you also have a further European influence which sort of comes into play. So the students of literature would, of course, know of the Romantic period in English literature, which sort of comes about around 1798 to about the 1830s. So parallel to this is also the figure of the dandy, which you could sort of correlate to this figure of the romantic, of the aesthete, who is again very sensitive to the world around him and is supposed to be well read, is supposed to be acquainted with the literature and the history that comes before him. And it is in this context that Wajid Ali Shah, of course, comes about. This particular photograph by Ahmad Ali Khan with Akhtar Mahal. So Wajid Ali Shah is born at a point where he is not exactly, so correct me if I'm wrong, is not supposed to be a king. He's not even a prince because his father is not a prince yet. So he is rather an artist, and that is the vision with which which sort of lives on through his entire life, really. And he then falls in line with the previous prince artists who we see in the beginning in terms of both Persianate culture as well as Indian court culture. And then Mustafa Ali Khan, who was his half-brother, who was supposed to be the king, eventually does not, but he does. And then, of course, you see how that then sort of influences the context in which Wajid Ali Shah is at, where you again have a rahas of Radha Krishna here, again sort of recurring motif of the Radha Krishna from the Kishangarh paintings that we saw, as well as the figure of the aesthete from Persian culture, from Persian paintings from 300 years ago, and how it all comes together very organically, very naturally in this world of Wajid Ali Shah and in this in these visuals. And in that context, of course, also to, I think, maybe to maybe push it a little further, that this
like I said, it's not just like the love for an individual person, but rather a sense of love, which may be what sort of, sort of makes him not to take up battle when the annexation happens, and maybe to avoid this bloodshed is what sort of collates it to the idea of a certain kind of non-violence and really love. And of course, the text itself, Ishqnama, sir, we are very curious to learn from you, and I'm really looking forward to it. So, sir, how would you describe this figure of the Ashik and Wajid Ali Shah's, his notion of Ishq itself? I'm really very grateful to Sanatkada for organizing such a good discussion on Ishq and Ishqnama. And what you have said right now, I conceive that you mean Wajid Ali Shah has been carrying the legacy from Firdausi Shahnama to himself in Ishqnama. Is it that? Yes, sir. Thank you, sir. So, if you see the book Ishqnama, you will find that Ishq is very, in terms of emotion and sentiments, penetrated into Wajid Ali Shah. And Ali Shah himself said several times, I feel sometimes myself as Kanhaiya. That is what you have predicted here. Yes, sir. तो जब हम इश्क़नामा की बात करते हैं तो अब हम लोग अपने ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा करें तो इश्क़नामा जो ओरिजिनल है वो तो वाजिद अली शाह ने लिखा ही इट इज़ रिटन बाय वाजिद अली शाह एंड इट्स ए मसनवी यू नो राइट poetic story. Yes, Masnavi means love in verses. It is called in Urdu at Masnavi. इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये ओरिजिनली इसका नाम इश्क़नामा है बट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू एज महल खाना शाही एंड अगेन फ्रॉम उर्दू इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू बांग्ला एंड इन हिंदी ऑल्सो एंड वन पर्सन सरवरी वॉज देयर उन्होंने इसका नाम बदल के परिखाना रख दिया. So Parikhana is more popular than Ishqnama or महल खाना शाही. तो इसलिए अगर हमको कुछ चीज़ें तो ऐसे रखना पड़ेंगी कि जो कंट्राडिक्शंस हैं इन ट्रांसलेशंस और उसमें इस बात को क्लियर करना पड़ेगा वी हैव टू कि इश्क क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इश्क इन द माइंड ऑफ वाजिद अली शाह. अगर आप पूरी किताब पढ़ें यू विल फाइंड एट द एंड वाजिद शाह रोट इन पर्शियन द ट्रांसलेशन आई एम टेलिंग हियर. होशियार रीडर वे पढ़ने वालों समझ लीजिए कि जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है वो काफ़ी कुछ सच है, मेरे साथ गुजरा है. और होशियार रहना, इश्क में कुछ मिलने वाला नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन इश्क और इसमें बहुत बर्बादी होती है. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वाजिद अली शाह फ्रॉम द एज ऑफ 8 टू द एज ऑफ 26. और उस पीरियड में जो भी उनके इश्क हुए हैं उसमें कुछ फेक भी हैं, कुछ सही भी हैं, बट इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू पॉपुलर बुक इश्क़नामा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. So in this context, so in the context of the other writings, he was the Masnavi, so as you mentioned. So in that context of the other writings, how do you see this particular book, and how are they correlated to maybe these other texts that he was parallelly writing? Actually, when his father became the king of Amjad Ali Shah in 1842, so he became heir apparent. उनके जानशीन हुए. तो at that time he started writing a play with the name Radha Kanhaiya, Qissa Radha Kanhaiya, and perhaps this was the first play of this land. उससे पहले अवध में वो इतना पॉपुलर नहीं था. तो
right from 1842 to 1847, he prepared it. He employed several नाचने वालियाँ, गाने वालियाँ, and other people for management, etc. And there was a place known as Rahas Manzil. And this Rahas Manzil got in oblivion and came to be known as Parikhana. तो सरवरी ने जो उसको ट्रांसलेट किया है, एक्चुअली वो परिखाना के नाम से किया है, और वो ज़्यादा पॉपुलर है इन कंपैरिजन टू इश्कनामा एंड महल खाना शाही. तो वो परिखाना फॉर 5 years 1842 to 1847, उसमें उन्होंने किस्सा राधा कन्हैया जो लिखा, उसमें जो विमेन उन्होंने एम्प्लॉय की थी उनसे वो करवाया, उसको स्टेज किया. उसमें ये कहा जाने लगा बाद में कि he himself has portrayed the character of Krishna, but it's not true as far as history tells us कि he never portrayed the character of Krishna. और उन्होंने अपनी इसी महल खाना शाही में, if you go through the book in Urdu महल खाना शाही, you will find कि उन्होंने लिखा है कि कृष्ण का रोल महबूब जान ने किया था, और इसी तरह जो उसकी सखियाँ थी वो किसने किया था. ये ज़रूर था एट द एंड ऑफ द प्ले जो भी परियाँ थीं, जो भी आर्टिस्ट थीं, वी कॉल्ड इट परी बट दे वर आर्टिस्ट. तो वो लास्ट में ये कहती थीं, बोलो जाने आलम की जय, कृष्ण कन्हैया की जय. एंड दैट टाइम ही यूज्ड टू स्टे ऑन द स्टेज and putting his hand on some pari and all that. तो वहाँ से ये conception conceive किया गया कि वो कृष्ण बनते थे. Sir, in that context, sorry. Yes, please. So also there's also confusion in the notion of whether he actually danced himself or not. So would you? Yes. Before it, I would like to tell some more things about. When he became king in 1847, so then this Qaisarbagh where we are sitting here, this building, this area became in existence. And he has written 3 masnavis based on that Ishqnama hi. Darya-e Tashuq, Afsana Ishq, or Bahre Ulfat. All these masnavi, today we called it a drama, were staged here in Lanka Koti. Actually, that Lanka Koti, which is not in existence now, that was the Rahas Manzil. And in तीनों मसनवियों में उन्होंने, what do you have painted here in your paintings, जो उन्होंने कंसीव की है स्टोरी, वो वहीं से की है. शाहनामा फिरदौसी जो आप बता रहे हैं, तो उन्होंने इश्क की और लव की स्टोरी वहीं से इश्क कंसीव की, उसको उसमें ड्राइव किया है. और जो उस ज़माने का माहौल था, फॉर एग्ज़ाम्पल कि देव हैं, परियां हैं और राक्षस हैं, जो उस तरह की कहानियाँ थीं, उनको उसमें उन्होंने किया है. तो इसके बाद ये तीनों जब तो 1850 और 1851 में he has compiled all those texts, all those masnavis in the form of Ishqnama. And here in 1851, 1852, it was published by himself and distributed to the public and all other officers of his kingdom. तो उसके बाद से फिर इश्क़नामा का रंग बदल गया और लोगों को ये हुआ कि इश्क़नामा शुड बी कम इन उर्दू. तब इश्क़नामा ट्रांसलेट होके महल खाना शाही में आई और परिखाना बना. तब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इश्क़नामा से और ओरिजिनल हिस्ट्री से चेंज होकर वो किंवदंतियाँ बन गई. Yes. So you're asking something about dance. Yes, sir. So in that context, whether he ever danced or not, and also since you mentioned the context, कैसे ये language change हो रहा है, तो
Persian probably would not have been too accessible to, say, a larger populace. Whereas Urdu and like a spoken language, जिसे वाजिद अली शाह का खुद का इतना लगाव था, तो वो translation से ये popular art में कैसे, how is it coming into it, and also again him as a performer, in that, coming back to that question also. Yes, but he was a patron of all these things, and he has done his extreme labor to popularize it. He was a singer, he was a poet, he was a writer, a good tabla nawaz, and sitar, you know, Qutb-ud-Dawla was the ustad of Wajid Shah in sitar. But I have never seen in any book, in any reference, that he has ever danced. हालांकि लोग यहाँ बहुत कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कथक करते थे. इवन मैं ऑडियंस को भी बताना चाह रहा हूँ कि एक हिस्टोरियन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जब बहादुर शाह जफ़र को क़ैद किया गया और उनको दिल्ली से रंगून भेजा गया, तो उनको एक दिन की इजाज़त दी गई बहादुर शाह जफ़र को, और उन्होंने हाल्ट किया कलकत्ता में, मठिया बुर्ज में. एंड एट दैट टाइम वाजिद अली शाह ने उनके सामने एक डांस पेश किया, एक कथक का एक आइटम, और इतना अच्छा पेश किया वो कि जो उन्होंने घुंघरू बांधे थे, जब वो चाहते थे उसमें से एक घुंघरू बजाते थे, जब चाहते थे 4 घुंघरू बजाते थे. और उसके बाद एट द क्लाइमेक्स ऑफ द इवेंट उनके पैर छिल गए, उससे खून निकलने लगा, द फ्लोर बिकेम रेड. तो मैंने उस पर एक सेमिनार में ये बात कही, मैंने कहा एक बात इस पर समझ में आने वाली नहीं है कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, जिसे हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, 27 जून को दिल्ली उन्होंने कैप्चर कर लिया था. एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर बहादुर शाह जफ़र सेंट टू रंगून. दैट टाइम वाजिद अली, वो बहादुर शाह जफ़र सेंट टू रंगून, एट दैट टाइम वाजिद शाह वाज इन फोर्ट विलियम, है ना. और फोर्ट विलियम में वो 30 महीने रहे, 2 years and 6 months. 59 में जुलाई में वो आज़ाद हुए. तो बहादुर शाह जफ़र कहाँ से उनको मिल गए, जो उन्होंने मटिया बुर्ज में उनको कथक भी दिखा दिया. और तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पॉपुलराइज की गई हैं, और उसका जो उन्होंने वो लिया है रेफरेंस अपने हिसाब से इश्कनामा. बट इश्कनामा में ये कहीं नहीं है, नाइदर इन इश्कनामा नॉन इट्स ट्रांसलेटेड फॉर्म महल खाना शाही, and nowhere in the history. And Ishqnama would have been completed about 6 years before this itself. Yes, and also I think there are these also, because he lived for such a long time in Calcutta, there are these apocryphal stories about how he would have performed at Boshubati, this very famous palatial building in Bagh Bazaar in Calcutta, from where, by the way, this Rakhi movement starts around the Palace of protest. Yes. So much before this, apparently, Wajid Ali Shah would have visited. And again, stories of him performing or not performing are again brought into question. There is good discussion about performing and not performing. So, Right, Wajid Ali Shah. But he would be coordinating these different rahas. And so they, as you mentioned, sir, they would have been maybe in these different complexes. No, I tell you one thing. Yes, sir. When I was translating, you know, Wajid Ali Shah की म्यूज़िक के ऊपर 5 किताबें हैं. बनी, नाजो, चंचल नाज़नीन, सौतुल मुबारक और दुल्हन. और ये 5 किताबें मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दी हैं. आपको अभी दी भी है मैंने. Thank you so और much. वाजिद अली शाह और अवध संगीत के नाम से. तो उन्होंने उसमें 5 किताबों में ये तो मिलता है कि उन्होंने ठुमरियाँ और दादरा और सावन, हर तरह की संगीत से मुताल्लिक़ सब चीज़ें लिखी. जी. और बनी में उन्होंने, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, बनी में उन्होंने कथक की 16 मुद्राएं, 16 मुद्राएं दी हैं. और उस पर देख के ये पता लगता है कि
उनको आना चाहिए जी। कोई भी पढ़ेगा कोई भी देखेगा जब उन्होंने दिया है कि ये घूंघट अट है ना ये कहरवा का है एंड दिस इज फॉर दुल्हन दिस इज फॉर तो जो 16 उन्होंने गतें दी हैं कथक की तो वो उससे पता लगता है कि वो जानते थे और ये कैन नॉट बी सेड कि उन्होंने डांस ना किया हो लेकिन अभी तक कोई रेफरेंस या हिस्ट्री से ऐसी नहीं मिलती जिससे पता लगे कंफर्म हो सके कि वो डायरेक्टली बल्कि हम लोगों को ये चाहिए और ख़ास तौर से आप भी यू आर डूइंग वर्क ऑन द सेम टॉपिक तो अगर ऐसा कोई रेफरेंस मिले तब तो बात पक्की हो जाएगी ज़रूर So there is, in fact, this one composition, this particular Thumri, which was written by him. Babal Mora? No, sir, Manaji Chel Nandalal. So this is in Rag So then this person called Ustad Chunnu Khan, whose father was a performer in Metia Buruj and who is also a sarod player, who later goes on to different places. He was a child, he might have been a 9-10-year-old kid at the court of Wajid Ali Shah. And then later in the the early 1900s, when these recordings are coming about, he's the first sarod artist who is recorded. And again, the restrictions under which he would have had to record would have been quite tight, because as a Dhrupad performer, again, to play something in just 3 minutes loudly to a horn would have been so different. But in this moment of spontaneity, he plays this particular piece, which is this composition of Manaji Chandra, which we just heard. Sorry for abruptly ending it. But, sir, in that context, again, how his art is sort of being... sorry. Yes, sir. Sort of spreading across these different popular mediums, and like we were discussing yesterday, so the film Inder Sabha, which in the 1930s, which again comes about, also has songs from this period which might not have been directly been composed by him, but heavily influenced by him. And in that context, again, coming back to this text of Ishqnama, on which there is so much curiosity, and how would you say it affects our contemporary culture, and also Indian cinema itself, the way it develops? So as you were mentioning, how it's the first play. Yes, it's a very important question, very discussable. Yes, sir. Actually, क्या है कि मैंने, as I have told you right now, yes, sir, कि Qissa Radha Kanhaiya was the first stage play right here in India. And after Qissa Radha Kanhaiya, Wajid Shah has staged 3 more Masnavis during his reign here when he was king. And in 1852 or 53, he fell ill. And at that time, there was kind of a vacuum in the stage and all these funds and arts. Around the time Dasture Wajdi. Yes, yes. Then
there was a writer in Amanat. Amanat has written Indra Sabha. Right. And Indra Sabha became so popular that after Indra Sabha, people started writing different kinds of sabhaएं. Even Nagar Sabha or Bandar Sabha or Kashyap Sabha. So then came one more writer, Ahsan Lakhnavi. Right. And he started writing. तो जो Bombay के Victoria Theatre of your Calcutta, there is one more theatre company of Parsis of Bombay. They took the business of this theatre. They started staging all those sabhaएं with different names in different cities. Even when in the 20th century, when cinema was not popular, लखनऊ में भी बाहर से ये पारसी थिएटर अपनी यही सभाएं लेकर आते थे. और उसके बाद आगा हशर कश्मीरी आए, उन्होंने बहुत से लिखे. और वो कोलकाता में भी रहे. हाँ, काफ़ी रहे. उन्होंने फरीदा खानम काफ़ी लिखा, पारसी थिएटर पर काफ़ी लिखा उन्होंने. तो उसके बाद ये हुआ कि जब फिल्म आ गई, फिर जब फिल्में आ गई, पहले सिर्फ बिना बोलती साइलेंट फिल्में आई, तो उसमें भी पूरा असर आपका उसी थिएटर का था. और उस थिएटर पर असर लखनऊ थिएटर का था. उसके बाद जब बोलती फिल्में आई तो उसमें भी पूरा असर डायरेक्टली इसी का था. तो हम ये कह सकते हैं कि स्टिल टुडे बॉलीवुड के ऊपर काफ़ी कुछ असर लखनऊ का और अवध का है, और उसी माहौल का है जो शायद वाजिद अली शाह ने सोचा हो कि क्रिएट हो जाए, बन जाए तो अच्छा है. So, and I think even like the studios that would have been created, like Kamal Amrohi would have been from Amroha, and that studio would continue to function until like I think 2019, and popular Bollywood cinemas are all staged there. And how you see, if you want to see the effect of Lucknow and Lucknow culture, this land on Bollywood, you will find that what we call today Hindi cinema, actually this is Urdu cinema. Absolutely, absolutely. You cannot, अगर आप उर्दू को थोड़ा सा अलग कर दें तो वो बॉलीवुड के एग्जिस्टेंस मुश्किल पड़ जाएगा. राइट फ्रॉम 1913, यानी जो 1913 में पहली वैसी फिल्म बनी थी बिना आवाज़ की, हरिश्चंद्र तारामती, एंड मुग़ल आज़म तक, यू विल फाइंड कि इसीलिए वहाँ को ये माना जाता था कि जो फिल्म लखनऊ में रिलीज़ हो रही है, अगर वो लोग पास कर देंगे, दैट मीन्स that would then pass the litmus test. आपको मैं एक दो चीज़ें बताऊं आप कि जब मुग़ल आज़म लिखी जा रही थी जी, तो आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज होगा कि यहाँ की एक बहुत मशहूर मसनवी है, ज़हर इश्क. ज़हर इश्क बहुत मशहूर मसनवी है, और कमाल अमरोही जब लिख रहे थे मुग़ल आज़म, तो के आसिफ ने उनसे कहा, और अमान जो थे ज़ीनत अमान के फादर, वो लोग लिख रहे थे, और वजाहत मिर्ज़ा चंगेज़ी. तो ये तय हुआ कि देखिए, अगर आप दिल्ली दरबार दिखाना चाहते हैं, मुग़ल दिखाना चाहते हैं, तो अगर आपने ओरिजिनल दिखा दिया तो डायलॉग आपके वो होंगे, तो क्या कर रहा है, तो किधर को जा रहा है, ए राजा एक बादशाह सुनता नहीं मेरी. तो ये तय हुआ कि नहीं, अगर आपको ज़बान रखना है तो आपको वही रखना पड़ेगी ज़हर इश्क की ज़बान है. और ज़हर इश्क की ज़बान वो थी जो लखनवी ज़बान थी. तो आप देखेंगे एक एक चीज़ मुग़ल आज़म पूरे पूरे सीन ऐसे लगते हैं कि ज़हर इश्क से चुराए गए. जब वो उसके पास पहला ख़त पहुंचता है अनारकली का, जी, वो वर्ड बाय वर्ड ज़हर इश्क से उतारा गया है. और उसके बाद जब वो जवाब लिखती है, वो जवाब लिखता है तो अनारकली को, वर्ड बाय वर्ड उसका है ज़हर इश्क की एक एक लाइन. और तहत जिसे कहते हैं, तहत भी कई जगह वही लिया गया है. तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अभी तक अगर कुछ ग्रेस, ग्रेविटी या कुछ बंधन इंडियन बॉलीवुड में है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंडियन कल्चर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लखनऊ कल्चर.
नौशाद खुद भी लखनऊ के ही थे और he has mentioned in his interviews how this culture of Wajid Ali Shah sort of influences his own music. नौशाद के बारे में तो ये है कि वो लखनऊ के थे। नौशाद को बैग मेरा लंबा लेक्चर भी अभी हुआ था, पंडित बिरजू महाराज मौजूद थे यहाँ उनके सामने। इस समय भी उनका एक फंक्शन हो रहा है जिसमें मैं भी इनवाइटेड था। मैंने कहा नहीं भैया मुझे वहाँ जाना है। तो नौशाद के ऊपर जो हुआ था उसमें ये बात कही गई थी, हमने भी कही थी कि नौशाद लखनऊ के थे इसीलिए इतना कामयाब हुए और उनके पास ठीक है मेहनत उनकी थी, लेकिन क्योंकि लखनऊ के थे और उस समय दौर था गमगीन नगमों का और गमगीन नगमे लखनऊ ने खुद उनको बताया और उन्होंने नौशाद ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं मुहर्रम के दिनों में लखनऊ ज़रूर जाता था, क्योंकि मुहर्रम में जो गमगीन नौहे वो होते थे उसमें मुझे बहुत अच्छा मौका मिलता था। तो बहुत से उनके गीत ऐसे हैं, कव्वालियाँ ऐसी हैं जो उन्होंने वो की हैं, बनाई हैं। उनकी ट्यून तक लखनऊ के उन पुराने गीतों पर या नौहों के ऊपर है जो यहाँ पर बहुत पॉपुलर थे। एंड दैट वाज द रीज़न ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन हिज एफर्ट्स। Sir, in that context again, वाजिद अली शाह के इश्कनामा जी नहीं, अब आप कुछ बताइए उनके ऊपर, आपने इतना काम किया है। जी सर, again here so the representations here of the Radha Krishna motive that would continue in both his plays as well as in other texts. तो उसके context में how would you see like the current context of ऊपर आ जाओ, ऊपर चल रहा है प्रोग्राम। नहीं नहीं, सलीमपुर हाउस में ऊपर। हाँ सॉरी, आप कुछ पूछ रहे हैं। सॉरी मैं बंद कर दूँ उसको। तो ये रहस्य जो वो स्टेज करती थी यहाँ पे, जैसे राधा कृष्णा, मारूक परी और सुल्तान परी वो दोनों यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हाउ वुड दीज इम्पैक्ट द लोकल पर्टिकुलर culture of Lucknow, because not a lot of people would have access to say the performance themselves, which would go on for maybe a month and a half, and different acts would be staged at different parts of Kaiser Bagh and the different palaces. और sir उसी तरह तो how is it reaching the larger public is what I also wanted to ask. नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब शाही स्टेज नहीं रहा जी कैसर बाग में, वाजिद शाह हैज़ लेफ्ट फॉर कलकत्ता, तो यहाँ पर पब्लिक में जो बीज बो दिया था इंदर सभा के नाम से अमानत ने, तो वो इंदर सभा इतनी पॉपुलर हुई थी। और एक जो उनका वाजिद शाह का वो था, व्हाट डू यू कॉल इट, पॉलिसी, यू कैन से पॉलिसी, कि एक ऐसी चीज़, हम एक ऐसा धागा उसमें सबको पिरो दें, कल्चर को, यहाँ के लोगों को, कि फिर वो आसानी से दुश्मनों का, दुश्मनों मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका मुकाबला कर सकें। एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन, क्योंकि जो उन्होंने संगीत के ज़रिए या अपने पॉपुलैरिटी के ज़रिए जो डिफरेंट रिलीजन्स को, डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा के लोगों को बांध दिया था, वो सब इतना ज़्यादा चाहने लगे थे उनको कि उनका जब वर्षा चले भी गए तब भी हम उनकी लीगेसी को यहाँ बरकरार रखेंगे। एंड दैट वाज द रीज़न कि जितने भी इंस्टीट्यूट थे, आप देखिए कैसर बाग में जो कथक इंस्टीट्यूट था यहाँ पहले शिफ्ट हो गया है, तो उसी जगह खोला गया था जो उनका एक पोर्शन ऐसा हुआ करता है जिसको परिखाना लोग कहते हैं। इसके अलावा सॉन्ग्स, और उन्होंने ख़ास बात यह है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो लिखा, लेकिन उसमें ज़्यादती उनकी अवधी ज़बान में रही। तो अवधी ज़बान में जो उन्होंने बंदिशें लिखी, ठुमरी, दादरा, ये सब, वो इतनी पॉपुलर थी कि वो उनकी रिसाई गांव के आखिरी इंसान तक और समाज में, सोसाइटी के उस लेवल तक पहुंच गई थी जिसको आज के नज़र में लोग बहुत पस्त समझते हैं। और वो भी ये कहते थे कि हम खुद वाजिद अली शाह हैं
अच्छा. तो that was the reason इतना popularity हो गई थी in all folks of and variety of folks. So, and I think that would also apply to Calcutta, because when again he comes to Calcutta, again many apocryphal stories, like you mentioned, the one with like Bahadur Shah Zafar coming in. There are so many of these stories where each of these other arts, and I think it was sort of blurred in terms of what you would really interpret as art, because the Shahi Panwala Motilal, who would also be working there, there is of course this story which again you have to take with a pinch of salt about how this person from the Shobha Bajar Rajbari family, Rupendra Krishna Deb, he visits Wajid Ali Shah on a winter morning around January, and it's quite chilly in Calcutta. I mean, as chilly as Calcutta gets, really. So he sees Wajid Ali Shah in this muslin angrakha, and he's not wearing anything else, and he asks him, what is the reason that you don't feel cold at all? And he says, it's because I had pan. And then he asks, what is this pan? And he offers him this, the entire silver casket of pans, and he has them, and he says it hasn't had an effect on me, so he has another one. And then apparently on his way back, he now feels so hot that he now starts to take off his coat, and then he takes off his clothes, and then eventually he still feels hot enough to actually go and sit next to the carriage driver, and despite that he still feels he's really hot. And I mean, again, like you take these stories with a pinch of salt, but you get a sense of how something like, you know, making of pan would also be seen as like as a form of art, and someone who was maybe making a roti in a similar way would only be making this itself. So in that context, again, to see, say, performances and theatre, which itself is his primary focus, one can only imagine the specialization into which each of these artists would have gone into. And again, the impact he, of course, would have had in Lucknow, and the impact he would have had in Calcutta. So again, the Tagore family, the branch of the Shourindra Mohan Tagores, he was very close to them, and Shourindra Mohan would visit himself, as well as several performers would come on and off, and their students then would, of course, live on through the different legacies. It was almost like two parallel worlds that are taking place, but then the impact of these different really kingdoms that he's making, like the one he's making in Lucknow, the one he's making in Calcutta, and the one he's making with his art, which is why we are here today, and which continues to thrive. You talked about the popularity of Wajid Ali Shah. Yes, sir. I tell you one real incident of Lucknow. Yes, sir. बहुत पुराना नहीं है, मेरे ही साथ हुआ वो. That shows the popularity of the last king of Lucknow, last king of Awadh. यहाँ चौक में इस समय मैंने कुछ सर्वे करना शुरू किया था, काम शुरू किया था, तो चौक में एक रस्तोगी साहब रहते थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और हम उनसे अक्सर ये कहते थे जब उनके घर की तरफ से गुजरते थे चौक से, अरे चचा कुछ तो हमको बताइए, आप पुराने रहने वाले हैं, हमको कुछ टीच कीजिए, कुछ ऐसे वाक़यात बताइए जो हम लिख सकें. तो हमेशा हंस के टाल देते, अरे बेटा जाओ, तो अपना कोशिश करो, मेहनत करो. बाय द वे, एक बार ऐसा हुआ कि जब हम उनके घर के आगे से गुजर रहे थे, तो वो बाहर अपने घर के खड़े हुए थे. तो हमने उस दिन भी कहा, हमने कहा चचा आदाब, और आज मैं आपके पास आया हूँ. तो उन्होंने यूँ ध्यान से देखा, आ जाओ बेटा आ जाओ, आज तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ. तो फिर वो अपने घर में ले गए. उनका बाहर रूम एक छोटा था, से 10 by 10, और उस पर एक जो पुराना स्टाइल होता है लखनऊ का, नीची सी चौकी लगी हुई, उस पर सफ़ेद चादर चांदनी कसी हुई, और उस पर वो बैठे हुए. कहने लगे आओ बैठो. 2-3 मिनट बैठे, फिर कहने लगे आओ तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ. फिर वो हमको हाथ पकड़ के अंदर ले गए ड्योढ़ी के. इट वॉज सो डार्क देयर कि अगर वो मेरा हाथ ना पकड़े होते तो मैं या टकरा जाता या गिर जाता. 4-6 स्टेप्स चलने के बाद वो लेफ्ट हैंड पर उनका एक और डोर था बड़ा, वो उसके अंदर. अब जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा, अरे पूरा महल, उनका घर पूरा महल, और उनका एक हॉल जिसमें वो मुझको लेके गए, इस हॉल से भी 1.5 गुना बड़ा था. एंड यू विल सरप्राइज, अगर मैं उसका मंजर कशी करूँ, स्केच करूँ, तो मोर देन हाफ ऑफ दैट हॉल
उसमें वो अमूल्य चीज़ें, वर्थ और दोज थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हीरे लगा हुआ पानदान, हाथी झूल, नेकलेस, गोल्ड नेकलेस और डायमंड की अंगूठियाँ, प्रेशियस स्टोन्स और all of them, you name anything, you will get there. And they are just put on display in the room? There. ख़ास बात उसमें ये थी कि उसके दूसरी तरफ एक चौकी नहीं कहने में उसका एक बेड, जिसको हम लोग उस पर सरहाना गोल हुआ करता था, उसमें जैसे बैठते हैं लोग लाइक दैट, और उस पर चांदी चढ़ी हुई थी पूरी, और उसके पीछे वाजिद अली शाह की एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी, और उसके जस्ट अपोजिट दूसरी वॉल के ऊपर एक शीशा मिरर बहुत बड़ा बेल्जियम का विद गोल्ड पेंट ऑल राउंड, वो कहा। तो मुझसे कहने लगे रस्तोगी साहब, बेटा ज़रा यहाँ बीच में खड़े हो जाओ। मैंने कहा जी। कहने लगे मैं इस चौकी पे बैठता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ बताना। और वो उस पर बैठे और उन्होंने एक हाथ यूँ किया। कहने लगे बेटा सामने वाले शीशे में देखो। तो बिल्कुल ये लग रहा था कि वो वाजिद अली शाह के कंधे पर हाथ रखे हैं और बैठे हुए हैं। तो कहने लगे क्यों बेटा कैसा लग रहा हूँ मैं? मैंने कहा सर आप तो बिल्कुल वाजिद शाह के भाई लग रहे हैं। तो बहुत ज़ोर से हंसे। कहने लगे बेटा बस यही बचा है और इसी पर हम लोग जी रहे हैं। तो आप ये समझिए से more than 180 years after, this is the popularity of that person who left in 1856 Lucknow with this option कि people will not fight, और वो हमारी लीगेसी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। एंड लोगों ने उसकी लीगेसी मेंटेन भी की। लेकिन जो 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ, लखनऊ ख़त्म हो गया, जो कुछ बचा था वो इधर से उधर शिफ्ट हो गया, बट द पॉपुलरिटी ऑफ वाजिद अली शाह इज स्टिल कंटैक्ट। I think it is again the probably the third kingdom which he sort of builds through his art. And also ये जो उनका जो again आशिकाना जो मिजाज, ये again ये writing के through से, ये art के through से ही connect कर रहा है, बिल्कुल, like, which is why it is it still continues to maybe thrive. So should we finish? Yes, more than sufficient. Yes, thank you so much. आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो प्यास कुछ अधूरी ना रहे। If there are any questions, we have mics, so we can move it around. Yes, please. So one thing I wanted to ask from you, that Wajid Ali Shah was also a man of contradictions. It's just like, every good is embedded with evil. So while he was sort of engaged in art, patronizing culture, countrymen were ravished by East India Company. And he's also compared as an arrow who looked away from the misery of the people. So how do you see that? Actually, this was all politics, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़ थी, they dominated all those things which were कहीं भी थोड़ी सी भी अगर कनेक्टेड थी, और उन्होंने उसको डिस्ट्रक्ट भी किया। They tried their level best to finish Lucknow by all means. And 3/4, as history tells us, 3/4 of Lucknow of Nawab period was destructed and destroyed. If you go through the memoirs of those poets, जब 1857 और 58 में लखनऊ बर्बाद हो रहा था, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर इतना कुछ बच गया, एंड वन मोर थिंग कि फिर अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, जो क्रीमी लेयर ऑफ द सोसाइटी थी उसको मिला लिया अपने से। तो उन्होंने एक ब्रिज पैदा कर दिया, एक ऐसा ब्रिज कि जब वो चाहते थे उधर से इधर आ जाते थे, जब चाहते थे इधर से उधर चले जाते थे। तो इस तरह से पॉलिटिकली भी उन्होंने कल्चर को, यहाँ की यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने की, ख़त्म करने की कोशिश की, बट दे कुडंट। इट इज़ स्टिल अलाइव एंड वी आर सिटिंग हियर। दैट इज़ द most important example of that. Just one more thing adding to that, sir, that
as he was also an artist, and artists are said to be the people who are very sensitive, not only to pleasure, but also to this grief and sorrow. So do you think that while he was seeing what was happening because of the ravages of the East India Company, that was somewhere reflecting in this art or the patronizing of the music and the culture that he was so popular about? Mr. Roy has already, just at the start of the talk, he has said that Wajid Ali Shah probably, perhaps, जो फिरदौसी की शाहनामा की लीगेसी थी वो उसको यहाँ कैरी कर रहे थे. तो if you see the legacy of शाहनामा और फिरदौसी, तो you will find Wajid Ali Shah in good picture, in good tasveer. You can get it. So like as you already mentioned, so again you also have to imagine that Wajid Ali Shah comes from a certain lineage of kings. Ghaziuddin Haidar is made king by the East India Company, and there is a larger political machinery which is working on to take over, annex this kingdom. So it's almost not personal against him. Anyone else who would have been king would have been taken over. So this political propaganda machinery that's building, it is trying to find faults within this administration itself, which, by the way, according to other contemporary sources, sir can correct me if I'm wrong, he is quite efficient in terms of making reforms in terms of the revenue, the police, and the military, which is why the period that sir mentioned in 1552, 53, when he's not there, he actually has to write a guide book called Dastur-e-Wajidi for the administration to run smoothly. And you also have to take in context of the different riots that are taking place in this kingdom itself, which he's very strictly controlling at this point. And now, if you go through the book Dastur-e-Wajidi, that was the constitution written by Wajid Ali Shah for his kingdom, but could not be carried out. Yeah, they had to actually. So Sleeman, who is the resident before Outram when the annexation happens, so Sleeman is again one of these figures who has traveled across India and has controlled the thugs. He's famously known as the Thuggy Sleeman. So he is traveling across the whole of Awadh, and he is making a survey particularly to make a point about what can we get against Wajid Ali Shah. So what he finds against him is that he's an artist, and that is what they sort of try to poke against. And this imagination of him being not an efficient administrator because he's an artist is also sort of faulty, because his other ministers who are working were maybe a part of the larger performances which he would stage. So Ali Naqi Khan, who was his prime minister, was also a sitar player. So for the British, it's with their own Victorian morals, it's impossible to comprehend how can a sitar player be running an office. Right. So which is their problem, not his really. But the administration itself ran so smoothly, and Sleeman himself had predicted that there would be a possible rebellion if we do annex. So Outram, who comes after him, does not do this survey. He reads Sleeman's reports, almost like he's a secondary source person, sort of. So he reads Sleeman's report, and it is on this basis that this annexation happens. And again, Sleeman's prediction too comes true, that he is such a popular figure in the land which he is quite successfully administering. And it's only, again, the larger question of historiography and how history is written about him and how he would be portrayed. It sort of takes into this account. I mean, again, to simplify it going back to the 1700s in terms of Sadarang's period, around which a lot of art is being developed. And you also, in 1737, you have Nadir Shah's invasion, which again sort of would equate him as the artist king who is sort of neglecting his administration. But you have to see the larger political context under which these administrators, these kings are facing. So again, it's not just an individual who ends up being at the butt end of this, but a larger machinery. And of course, in the time of political propaganda, you would understand its context, how that can affect the minds of the people who are living at that point and the people who come after. Really. जी तकी साहब एक सवाल इधर मैं वजाहत हुसैन रिजवी जी पूछिए. ख़ास तौर से जो ये वाजिद अली शाह के किरदार को मस्ख किया गया है, इस सिलसिले में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं. मुझे कुछ उस वाक़े को मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन सुना है कि कोई इस तरह की कोई मस्जिद थी या कोई इमाम बारगाह थी जिसके लिए हुआ कि ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उसकी नींव रखे, जिसकी नमाज सुबह कभी क़ज़ा ना होगी.
तो क्या इसके बारे में कुछ आपको मालूमात हो तो मुझे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और उसी मतलब आपको जवाब मिलना चाहिए कि जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, वाजिद शाह ने ख़ुद अपनी जो ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हैं 2-3, उसमें उन्होंने ये साफ साफ लिख दिया है कि मेरी कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई, यानी छूटी नहीं, कोई भी रोज़ा मैंने छोड़ा नहीं। और लास्ट में वो लिखते हैं जब वो बहुत बीमार हो गए थे कि खुदा गवाह है कि मुझसे कोई नमाज या कोई रोज़ा नहीं छूटा सिवाय इन दिनों के जबकि मैं घुटनों से मजबूर हो गया हूँ। तो इट शोज़ कि उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। और ये भी उन्होंने लिखा कि खुम्स और ज़कात बराबर देता हूँ, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो भी चाहिए होता है वो मैं देता हूँ। तो इस बात से ये बात साफ़ होती है, ये आदमी ख़ुद कन्फेस कर रहा है कि मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। तो अगर ये बात को यूँ जोड़ा जाए तो बुरी भी नहीं है। और हिस्ट्री में ये लिखा नहीं है कहीं, हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये कहा जाता है कि ये लखनऊ में जो आपने अब जहाँ वो बस गया है सरफराजगंज इलाका मूसाबाग के पास, तो वहाँ एक मस्जिद है जिसे जन्नातों वाली मस्जिद कहते हैं। तो वो लोगों ने बताया कि जन्नातों वाली मस्जिद क्यों कहते हैं उसको, उसकी वजह ये थी कि वाजिद अली शाह जब किंग थे तो वो परेड के लिए, चूँकि जो कैंट था, कैंटोनमेंट था नवाब्स का, वो उसी तरफ था गोमती किनारे, जिसे मूसा बाग वो कहते थे। आज भी वहाँ पर आप जाएं तो तोपखाना भी मौजूद है जो, और गोल खाना भी मौजूद है जहाँ पर होते थे। तो पूरा कैंटोनमेंट जो था उनका वहीं था, तो वहीं पर वो जाते थे परेड लेने के लिए। तो एक दिन वो परेड लेने में उनको देर हो गई, तो वहाँ पर नमाज का टाइम हो गया। तो वो बहुत नाराज़ हुए कि मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ, यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है। ये कह के वो चले आए। जब नेक्स्ट डे वो पहुँचे आफ्टर 24 या 72 आवर्स, हाँ 72 घंटे के बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो फ़ौज थी उसने वहाँ एक मस्जिद बना दी थी। तो उन्होंने कहा ये कैसे भाई, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो उन्होंने ख़ुद कहा अच्छा लगता है ये जन्नातों ने बनाई है। तो तब से ये मस्जिद भी जन्नातों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर हो गई। और ये वाक़या भी ओरल हिस्ट्री है, कहीं लिखा नहीं है लेकिन ओरल हिस्ट्री है, इसको रेफ़र किया जाता है। तकी साहब, एक अक्सर जैसे लोग कहते हैं कि अगर कोई जूती पहनाने वाला होता तो ये हशर ना होता। तो मौलाना अब्दुल सलाम नदवी ने 1972 में एक मजमून लिखा था कौमी आवाज़ में, जो संडे एडिशन में छापा था। वो पूरा तो नहीं मुझे हाथ लगा, लेकिन उसमें एक वाक़या लिखा था कि इस तख्ता पलट से 2 दिन पहले उनको पूरी मालूमात थी कि साहब ये फ़ौज कशी होने वाली है और हमारा ख़ात्मा होने वाला हुकूमत का। तो उन्हीं ने अपने फ़ौजियों से हथियार रखवा लिए थे। पूछा उनके किसी मसाहिब ने कि ऐसा क्यों, उनका हमारे लोगों का कत्ल खून ना हो, क्योंकि जब हम जंग करेंगे किसी ने भी एक गोली चला दी तो साहब बड़े पैमाने पर शहर के लोगों का और फ़ौजियों का कत्लेआम हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमने हथियार रखवा लिए। आपके सवाल के 2 पहलू हैं, मैं दोनों का अलग अलग जवाब बता रहा हूँ। वाजिद शाह ने जो अपनी दूसरी बायोग्राफी है हुस्न अख्तर, उसमें लिखा है न की जंग पर बावजूहात चंद बयां मैं करूं तुमसे ऐ अर्जुमंद, अगर जंग करता तो 10 साल तक, अगर जंग करता तो 10 साल तक, मगर आखिरश थी शिकस्त तो हतक। क्यों? जंग का पहला ही फ़न है फ़रेब, जंग का पहला ही फ़न है फ़रेब, मैं ठहरा सैयद मुझे कहा नसीब। 7 जनवरी को आउटरम ने अली नकी ख़ान को बुलवाया और एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी का परफॉर्मा दिया, जिसमें ये लिखा था कि आज से आपकी गवर्नमेंट ख़त्म की जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको टेक ओवर करने का फ़ैसला कर लिया है। लॉर्ड डलहौजी का ये फरमान है और इस पर उनसे कहो कि दस्तखत कर दे। तो अली नकी ख़ान ने जाके उनसे ये कहा वाजिद शाह से कि बेहतराई इसी में है कि आप इस पर अपनी मुहर ज़ब्त कर दें, लगा दें और इस पर साइन कर दें, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। वाजिद अली शाह ने सख्ती से मना कर दिया कि, और फिर अपने फाइनेंस मिनिस्टर बालकृष्ण को बुलवाया और उनसे कहा कि अगर मैं
कभी ग़ुनूदगी में या किसी ऐसे उसमें मशगूल हूँ कि गलती से मैं साइन इसमें कर दूँ तो मानना नहीं, क्योंकि मैं किसी हाल में भी यहाँ साइन नहीं करूँगा। और ये सब 1 महीने तक ये ड्रामेबाजी, पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। ही डिडंट साइन एनी ट्रीटी, एनी एग्रीमेंट। आउटरम बहुत नाराज़ भी हुआ, लेकिन नहीं माना। 13 फरवरी को ही हैज़ लेफ्ट लखनऊ विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स। और ये सोच के यहाँ बताया गया, उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, हमारे एक आर्टिकल में भी है कि लखनऊ से कैसे रुखसत हुई उनकी, और बहुत पब्लिक रोई। और उसके बाद इतने चाहने वाले थे कि उनकी जो टमटम थी उसके पीछे दौड़ते हुए मीलों तक गए, जबकि रात में निकले थे। तो उससे ये पता लगा कि वो वाला जो बहुत लोगों ने पॉपुलर कर रखा है कि कोई था नहीं उनकी चप्पल पहनाने के लिए, वो एक फेक ऐसे र्यूमर है, लोग हिस्ट्री में उड़ाते रहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कथक का एक एग्जांपल दिया कि वाजिद अली शाह वहाँ फोर्ट विलियम में कैद थे, और एक हिस्टोरियन ने, बहुत पॉपुलर हिस्टोरियन, उन्होंने लिख दिया कि बहादुर शाह जफ़र के सामने उन्होंने कथक किया था। तो इस तरह की बातें बहुत सी हिस्ट्री में लिखी जाती हैं। बट व्हेन वी टॉक ऑफ द हिस्ट्री वी शुड बी ईमानदार, ठीक है। हमको बताना चाहिए, लोग माने ना माने या क्या माने, वो एक अलग बात है। और इस तरह की कहानियाँ लखनऊ में तो इतने ज़बरदस्त लोग थे, कहानियाँ बनाने वाले, मशहूर हैं कि किस्सा गो, दास्तान गो, ऐसे ऐसे किस्से बनाते थे। एक किस्सा मैं आपको सुना दूँ बस आखिरी, कि साहब वाजिद अली शाह एक बार दरगाह गए या किसी मज़ार पर गए, और जब वहाँ से वो निकले बाहर तो उनकी जूती जो थी, चप्पल, वो खो गई, फिर उठा ले गया। तो अब बड़ा खड़बड़ी मच गई, कैसे ये कैसे होगा, कैसे होगा। तो कोई एक बहुत चालाक था, उसने कहा नहीं हुजूर ये मिल गई आपकी दूसरी जूती, पहना दी उनको, और वो जूती पहन के आ गए। जैसे ही अपने महल में पहुँचे कैसरवा, पैर अंदर रखा, वो जूती टूट गई। तो कहने वाले ने ये कहा कि देखिए कितना एक्सपर्ट थे, इतनी देर के लिए बनाई थी कि बस वहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो इस तरह की ये किस्से हैं, उसमें नॉट नेसेसरली उसमें कुछ सच्चाई हो। नहीं, मैंने बताया ना कि जब कोई, नहीं मैंने वही बताया ना कि 80,000 की फ़ौज थी, और उन्होंने जाने से पहले ये फरमान किया कि कोई लड़ेगा नहीं, इसलिए कि अगर मैं, उन्होंने लिखा भी है, अगर जंग करता तो 10 साल तक। और मैंने जंग क्यों नहीं की, मैं उनके तुम्हें कारण बताऊं। एक तो ये कि मैं सीधा साधा आदमी हूँ, और जंग का पहला ही फ़न है, पहला ही स्टाइल है फरेब, वो मुझ में नहीं था। तो इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी करके सारे डिस्माउंट कर दिए थे, जितने भी तोपें थीं वो थीं, और 80,000 की फ़ौज। उसके बाद एक ग्रे कमीशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैठाया था। बस लास्ट पे एक सेंटेंस बता दूं, ग्रे कमीशन। और उसने, ग्रे कमीशन ने बड़ी ये कोशिश की कि जो नौकरी से निकाल दिए गए हैं जो फ़ौजी, वो फिर से आके ज्वाइन कर लें, और हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय मानेंगे, उनके जो एरियर्स होंगे वो भी देंगे। बट ये बहुत सरप्राइज़, बहुत ही वैसी चीज़ है कि 98% जो निकाले गए थे फ़ौजी, उन्होंने मना कर दिया गया कि हम तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। जबकि आउटरम ने ये लिखा, और ग्रे ने उसको, कर्नल ग्रे ने उसको सेकंड किया कि द राइडर्स, घुड़सवार और तोपची जो फायर ब्रांड है, इवन एट द एज ऑफ 45 and 50 दे आर एक्सेलेंट, एंड इफ़ दे ज्वाइन ब्रिटिश फौज, ब्रिटिश सोल्जर, ब्रिटिश सैनिक, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। बट ऑल ऑफ देम डिनाइड, नॉट ए सिंगल वन came forward to join East India Company forces. हेलो सर, आदाब। इधर से मैं, अरे सर मेरा सवाल, मैं आदाब पेश करता हूँ, काशिफ शेरवानी। पहले तो मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रिया पेश करना चाहता हूँ, जो ये चप्पल पहनने और छोड़ने वाली जो किस्सा इतने सालों तक हम लोगों ने सुना है, ये जो है वो है। दूसरा ये मैं ये जानना चाहता, बड़ा मासूम सवाल है कि नवाब साहब का बंगाल के फूड कल्चर पे कितना इम्पैक्ट था, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि नवाब साहब का बिरयानी का जो बेसिकली वहाँ पे जो बिरयानी का जो ब्लूम हुआ, वो नवाब साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल था।
अब वो आलू की दास्तान में हम नहीं जाना चाहेंगे, वो एक बड़ा अलग मामला है, उसमें तो सब कॉन्टिनेंट पूरा परेशान है। लेकिन बस ये बंगाल में नवाब साहब का फूड का क्या इम्पैक्ट था, जैसे अवधी क्यूजिन दुनिया की बेहतरीन क्यूजिन है, तो वो मैं जानना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, दैट्स अगेन वंडरफुल क्वेश्चन। बट या ये क्वेश्चन तो बंगाल में भी कलकत्ता में भी आता रहता है। जस्ट टू ऑल्सो गिव यू कॉन्टेक्स्ट, कराची ऑल्सो हैज़ आलू इन इट्स बिरयानी। तो इट्स लाइक people in Calcutta always believe that it's like we are the only ones, but I think to imagine food in our contemporary context might be a little different from the context in which maybe food would be presented to him. So so maybe the biryani that we would have now, so he would, I think he would be presented with 12 different kinds of pulaus in the court. And अब हम जिसको बिरयानी बोल रहे हैं, किसको पुलाव बोल रहे हैं, तो and there was such a beautiful discussion on food right before. So it would be so different, also similar. So maybe हम जैसे बिरयानी खाते हैं, तो it is for us like as individuals. Whereas when something's being presented to a king, like also even in terms of performances, when they are being presented to a king, it's for him. So it would be garnished in such a way. So शायद ऐसा होगा कि ऐसा एक बड़ा सा ऊँट, उसके अंदर एक गोट, उसके अंदर एक चिकन, फिर ये सब देके एक बिरयानी बना, फिर वो शायद पीकॉक फेदर्स देके सजा के वाजिद अली शाह के लिए प्रेजेंट किया गया, और फिर जो मीट के कीमा बॉल्स जो हैं वो इस पुलाव में हैं, तो बाकी सारे ऑफिशियल और स्मॉलर ऑफिशियल्स जो है उनको शायद सिर्फ यो कीमा बॉल मिलेगा, वो ऊँट का कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो ही सकता है। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, they would also not be staged in the sense of how we do have an audience here, but rather for this one individual where maybe everyone else who's present is essentially eavesdropping, which is what would have been maybe the court structure. So again, correct me if I'm wrong. So this would have been a different context, but Kolkata में actually काफ़ी सारे influences आ गए। जैसे आलू का तो पोर्तुगीज़ के टाइम से ही आ गया। तो पोर्तुगीज़ जब शाहजहां के पीरियड में वो जब बंगाल आए, बैंडल में दे सेटअप, तो वो लोग उन लोगों ने एक ऐसा चीज़ किया था कि बताशा जो होता है ना, तो वैसे बताशे के शुगर के वो लोग मठ बनाने लगे, विच वॉज बेसिकली मर्चेंडाइज ऑफ लिटिल चर्चेज. So they would make these sugar cubes of little churches, and these would be distributed amongst the different villages and the people. So सोचा था कि इससे Christianity का और भी शायद नाम बढ़ेगा. But the local जो मोयरा जो caste जो है बंगाल में, so they started mixing. They found it really fun. They mixed it with their batasha thing. They started making different animal-shaped things, which is still used in our different like household pujas. Like Lakshmi Puja would have these little things, and we still call it mat, but we don't know like why this church thing. So again, the aloo comes in through the Portuguese into these different Bengali dishes already, and there is a continuous assimilation that's happening in terms of the culinary culture in the city. And again, Calcutta itself is also a cosmopolitan city, just like Lucknow. So when Wajid Ali Shah's, the different people who were at the court post his death in the 1880s, they start going to these, they start opening their own shops, which also might have been beneath their idea of their stature of an artist again. So these roll shops again are, I mean, I don't know, you take it with a pinch of salt, would also maybe come about of this combination of the Nawabi food. And again, most of the biryani shops in Calcutta still call Lucknowi biryani, and that is really the idea, and I think that's a more of a 20th century modern concept where you get a food on the go, or from our generation जब हम Zomato में order कर देते हैं, हाँ, तो तब वही एक vague ऐसा idea कि शायद इससे नवाबी times का कोई एक relation है, maybe makes us hungrier, I don't know. So that's probably it's a very different context, but it is also a continuous process of assimilation that is happening in terms of the food. And of course, people love the galati kebabs in Calcutta. And all of this food is actually going through Wajid Ali Shah. And it's not just food, it's also the different zamindars who were there in Bengal at this point. They were also looking for the fine tailors who were going from Lucknow. So Wajid Ali Shah wasn't the first person who was going from Lucknow. You already had this Dastan Goi artist, Tehseen, who goes in the 1700s
in Bengal, and then while traveling on a boat, he hears this story by a boatman. And he really loves this story. He thinks he'll turn this into a dastan goi. So he comes back here, asks Shujauddaulah for permission. He says, I will compose this, and Shujauddaulah grants him the permission. Not Arzimurassa. So Shujauddaulah passes, and then Asafuddaulah becomes the Nawab. But then that is eventually, it takes shape into Not Arzimurassa, which is again later translated into Urdu. And then the first publication that happens in Calcutta at the Fort William College. So it's like a continuous, like a back and forth that's happening between these two relatively new cities in a way, like as they are emerging at this point. So it's both food and culture, and none of this is divorced really. It's like it's a continuation of a larger legacy. So Wajid Ali Shah se pehle bhi, you would have singers and performers who would be going to Kolkata in the different Rajbaris. So there was a ground that was already made, but Wajid Ali Shah himself being there, like the icon that he was, would of course leave the, so. Yes, so I think maybe we should end it. And of course, the book. And वाजिद अली शाह, जिसको हम लोग आज उनकी किताब पर डिस्कशन कर रहे थे, इश्कनामा, Ronti Dev Sen Gupta has written a book based on that Ishqnama. This is originally in Bengali, but Mr. Hindol Chakravarti has translated it into English. तो यहाँ हम लोग उसको दिखाई दे रहे हैं खड़े होके, ताकि अच्छा ये है, ओहो, रिलीज के लिए तो यही, प्लीज, अरे आप, you are our guest. Please. So it's my pleasure, it's our pleasure rather. You people came and listeners, thank you so much. On behalf of Sanatkada, we'd like to thank our guests today, Soumyadeep Roy and Dr. Taqui. It was a very interesting and insightful discussion.